बेऔलादी दुनिया भर में एक बड़ा मसला है जिसकी वजूहात पर माजी में तवज्जो नहीं दी जाती रही। आज इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर रोबोटिक सर्जन डॉक्टर रिजवान मलिक साहब। डॉक्टर साहब इनफर्टिलिटी और IVF तरीका इलाज के माहिर हैं और पाकिस्तान और अमेरिका में अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर के नाम से इदारा चला रहे हैं। उनसे हम इस मर्ज के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कि जब हम इनफर्टिलिटी की बात करते हैं, बांझपन की बात करते हैं, तो ये मर्द और ख़वातीन दोनों में मौजूद है। इसकी तशखीस कैसे होती है और सही टाइम क्या है टेस्ट कराने के लिए? बांझपन जो है वो तकरीबन 15% जो है आपकी पॉपुलेशन है। किया जाता है, तो इसमें भी क्या एक नॉर्मल फिजिशियन से आप बातचीत कर सकते हो या एक स्पेसिफिक सेंटर के पास जाना ही ज़रूरी है? और इलाज कितने किस्म के मौजूद है इसके लिए, ट्रीटमेंट्स क्या हैं? हाँ जी, नहीं इसमें ये कि अच्छा ट्रीटमेंट जो है आपकी अपनी कम्युनिटी से शुरू हो सकता है। वी हैव लॉट ऑफ टैलेंटेड फिजिशियंस और बहुत अच्छे डॉक्टर्स आर अवेलेबल इन पाकिस्तान इन योर ओन कम्युनिटी। वहाँ से आप ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। इनिशियल इलाज जो है वो किया जा सकता है और उन वहाँ से आप देखिए कि क्या आपका इलाज मुहैया है। बहुत जो है कपल्स हैं उनकी दे अचीव सक्सेस, दे अचीव प्रेगनेंसी। लेकिन अगर आपको कामयाबी वहाँ से नहीं होती तो आपको एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में जाके अपना इन डेप्थ एवेलुएशन, इन्वेस्टिगेशन, इलाज की ज़रूरत है। तो उसके लिए देयर आर मल्टीपल सेंटर्स एंड वी हैव क्रिएटेड अ सेंटर अलॉन्ग द लाइंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट होती है वहाँ पे हमारी पूरी टीम आती है फ्रॉम ओवरसीज, फ्रॉम यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ से आके हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं द सेम एनवायरनमेंट, द सेम प्रोटोकॉल, सेम ट्रीटमेंट और डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक मोडालिटीज़ जो बाहर मुहैया हैं। सो यू गेट द केयर दैट यू विल गेट इन ओवरसीज, यू गेट इन पाकिस्तान। उसमें यह कि बांझपन जो है उसकी ट्रीटमेंट आप मेडिसिन से भी कर सकते हैं, जो विच कई लोगों का जो है कपल्स की ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ मेडिकल थेरेपी में भी इनफ, बट लेकिन देयर आर सम कपल्स जिसमें सर्जिकल ट्रीटमेंट है। उसके लिए वी हैव क्रिएटेड अ सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। तो उसमें यह कि वी हैव मोस्ट एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक टेक्निक्स अवेलेबल एंड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी इन पाकिस्तान। और through that or through a test tube baby for that matter, the couples that may need that treatment is available right here in Pakistan as well. डॉक्टर साहब, ट्रीटमेंट की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, इनफर्टिलिटी की वो कौन सी स्टेज है जिस पर सर्जिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, मेडिसिन से काम नहीं चलता? इसमें हमेशा ये होता है कि इनिशियली आप जब कपल आता है तो उसको हम देखते हैं कि वजह क्या है। तो उसमें मेल फैक्टर इज़ क्वाइट कॉमन, अबाउट 30 to 40% ऑफ द कपल्स विल हैव सम सॉर्ट ऑफ मेल फैक्टर, जहाँ पे जो हस्बैंड है उसमें देयर इज़ सम हर्डल इन अचीविंग अ प्रेगनेंसी। तो उसमें हम देखते हैं कि वजह क्या है। उसकी वाइफ में कुछ है, समटाइम्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो इनिशियल इज़ डायग्नोस्टिक वर्क और उसके बाद ये है कि थेरेप्यूटिक वर्क में फिर आ जाता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट सब शुरू करते हैं। और मेडिकल थेरेपी अगर कामयाब नहीं होती या हमें डायग्नोस्टिक्स में पता चलता है कि मेडिकल थेरेपी विल नॉट बी इफेक्टिव, तो वहाँ पे फिर वी मूव टुवर्ड्स इधर सर्जिकल ऑप्शंस। अगर सर्जिकली फिक्स्ड एक कॉज है ताकि वो नेचुरल कंसेप्शन कर सकें या उससे जो प्रॉब्लम उसका रूट कॉज फिक्स हो। और जो कपल्स जहाँ पे ये कि मेडिकल थेरेपी या सर्जिकल थेरेपी मे नॉट बी इफेक्टिव और डजंट वर्क, उनके लिए फिर देन IVF in vitro fertilization or test tube baby for that matter is quite effective and maybe the best option that they may utilize. डॉक्टर साहब, हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उनकी गाइडेंस के लिए बताएगा कि शादी के बाद कितना आप टाइम फ्रेम देते हैं कि उतने टाइम में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कि उतना एक नॉर्मल केसेस में होता है, और फिर कितने ड्यूरेशन के बाद आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत है?
हाँ जी, उसमें ये कि शादी के बाद within 1 year 85% of couples should achieve a pregnancy under the age of 35. तो उसमें यह है कि आप बिल्कुल परेशान ना हो शादी के बाद. कई दफ़ा होता है couples they get nervous, 1-2-3 महीने conception नहीं हुई, so they will get nervous and start to worry about that. तो उसमें हमारी advice ये है कि आप जो उनसे initially for 1 year just relax, just lead your life, that's normal, and उसमें आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं है. अगर 1 साल में conception नहीं हुई, so that's a good time to seek. It doesn't mean there's a big problem, there's a disease, anything bad. It just means you need to consult a specialized center जहाँ पे आपकी diagnostic work हो और देखा जाए कि is there a reason we should get more aggressive care. तो कई दफ़ा it may just be reassurance and then further treatment may be recommended. कई दफ़ा ये होता है कि we find such severe issue and problem, we're able to diagnose it and conduct the treatment early on. उसमें उसी के लिहाज से है कि above the age of 35, our recommendation is कि 6 months of trying to get pregnant, achieving after marriage, उसके बाद seek करें, because the chances of pregnancy get less as the woman's age goes up. So after age 35 it's 6 months, before 35 it's 1 year. And that also उसके साथ एक और हमारे एक काफ़ी common part of our actually from Pakistan is unique that I saw as compared to practice in the United States, जहाँ पे local community में लोग रहते हैं सारा it's all there. Pakistan is quite common that a husband will live overseas and a wife is in Pakistan. Many Saudi Arabia, Middle East, many parts of the country that is there, that the husband is there for work or many other business and the wife is here. Usme it becomes difficult. So that's another unique situation in which a couple may seek care from a specialized center कि जहाँ पे they would not lose that opportunity, they would not delay starting their family, it can still be achieved, and we have abilities to continue the treatment and continue that attempt for pregnancy even when the couple is separated. So many people come in, let's say once every 2 years, aate hain husbands, so we store their sperm samples and we're able to conduct the treatments while the husband is away on the way, we're able to help the wife get pregnant during this time frame. So that's very useful for a lot of people who cannot come or stay for that much in Pakistan. जो सर्जरीज होती हैं, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है इनफर्टिलिटी का, सक्सेस रेट उसमें क्या है, कितने चांसेस होते हैं कि आप फिर कंसीव कर लो उसमें? हाँ जी, सर्जरी का ये होता है कि सर्जरी आई थिंक हैज़ टू बी रियली डिस्क्राइब्ड. जो सर्जरी होती है कई दफ़ा ये होता है कि women would undergo surgery which is can be more harmful than helpful. So one has to be, I think it's very important for women to seek the expertise, the right person, the right expertise. So we have created a center of excellence for advanced minimally invasive surgery in Islamabad, जिसमें women's health care की focused जो है laparoscopic and hysteroscopic surgeries are available. उसमें fibroid treatment, heavy menstrual cycles, different pathologies. We have treated with जो है ovarian masses, cysts, or fertility related endometriosis surgeries. So those are our expertise. That's what we have done. That's what we do in the United States, and that's what we brought to Pakistan, to this center of excellence. So minimally invasive surgeries are available now in Pakistan, and that's really where I think the important to seek care, to get the surgical care at a center in which you will get the proper surgical outcome. जहाँ पे आप सर्जरी करते हैं तो उसका eventual results. So आपने कहा कि उसकी क्या treatment है, क्या success है. So success will depend upon the underlying cause. So frequently we can, with the surgical procedure, we can repair reversible cause. So adhesions हो गए, endometriosis हो गया, there are many factors, ovarian cysts, things like that. But plus it becomes diagnostic, which means that we find out if there's a irreversible cause. We know that further medical treatment or waiting in this case would not be effective. So that's where we need to go out and seek treatment through in vitro fertilization or more aggressive, more advanced techniques or treatment protocols जहाँ पे the couple may move on instead of waiting further.
ट्रीटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में ज़रा क्लैरिटी दीजिएगा। टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या और ये ट्रीटमेंट पाकिस्तान में अवेलेबल है, और अगर है तो उसी एडवांस तरीके से, उसी टेक्नोलॉजी से अवेलेबल है जैसे फॉरेन कंट्रीज यूके यूएसए हम जाते हैं इस तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए? हाँ जी, नहीं बिल्कुल, एक्चुअली वेरी मच सो। हमने वी हैव एस्टैब्लिश्ड द मोस्ट एडवांस्ड IVF facility right here in Pakistan, in Islamabad. The same treatment, same equipment, same technology that's available and being used in the United States, Australia, UK, anywhere in the world, France, Germany, we have established the most advanced techniques right here. So there's a tool, there's a piece of equipment that's used, and then there's an operator behind that equipment. Both matter. So that's what's unique about our program. Just mean not only that we have the best tools, the best facilities, but we also have the best operators. So we pulled together a team of experts जो आते हैं from Europe and United States, and they do the same practice that is being done, cutting edge practice that's being done there is then operated right here in Pakistan. So that really combination, unique combination of the best tools and the best technicians or the best operators of those tools is really the, I think, unique combination that sets us apart and allows us to get the best outcomes for our patients. We coincide the travel of the couples. They come in, they get treatment, and in about 20 to 30 days they complete their treatment and they're able to go back to the comfort of their home and enjoy the rewards of the treatment from Pakistan. So that really has been, I think, a great privilege to be a part of this change, a paradigm shift. कि जहाँ पे पहले ये था कि hey, for treatment we need to go out, we are changing that paradigm. We are saying, listen, no, the same treatment is available right here in Pakistan, and we take a lot of pride in that. That you know, that Pakistan is becoming the center of excellence. It's creating. We want to create a name for Pakistan for good things, for achievements we are able to do, for what good we are able to do, deliver right here in the country, instead of that we're for whatever best thing that we should go out. No, for the best thing you come to Pakistan. That कुछ वजूहात और कॉजेज़ की बात करें, यहाँ पर पाकिस्तानी पेशेंट्स जिनको आप देखते हैं, जिनका ट्रीटमेंट करते हैं, आपने क्या नोटिस किया है पाकिस्तान में कॉमन कॉजेज़ क्या है, ख़वातीन में भी और मर्द हजरात में भी बांझपन के? हाँ जी, so पाकिस्तान में it's the common, just like I said, 15% population will face fertility issues. So I don't like to call it disease. It's, I think, a hurdle, a problem जो है जिसके which can be easily overcome. So common causes जो हैं वो there's 40% of time it's male factors. So very important to address that early on. जब when the couple comes to us, we have specialized lab लेकिन मोस्टली हमारी सोसाइटी में होता ये कि ख़वातीन को पहले चेकअप के लिए लेके जाया जाता है मर्द हजरात के निस्बत।
some of the effects of our environments come in. So male factor is 40%. We are the our center takes a lot of pride in that we focus on male fertility, and we have expertise to evaluate, diagnose, and treat full range of male fertility. So like something azoospermia, we have the most experience with the azoospermia in the country. If we treat azoospermic men, and we are able to achieve pregnancy in those situations as well. There's zero sperm in the count, in the semen analysis. So उसमें ये कि male factor is there, so we have expertise to treat and evaluate, diagnose, and help achieve pregnancy in those situations. जहाँ तक ख़वातीन का ताल्लुक आ जाता है, so that's about, just imagine about 60% again, 60 to 70% is female factor. So उसमें the primary thing is age. As the age goes, after age 32, fertility starts to decline. So उसमें ये होता है कि कई दफ़ा मैंने देखा, very common thing, like I said in Pakistan, I've noticed that couples, they start the treatment on time. It's not they delay it. You know, at 25, 26, they've seeked out care. But if they're sort of fine, just go, you're fine, go a couple years, come back in 2 or 3 years, or take this pill, take that pill, and their time is wasted. Now they show up at age 40 to my clinic and say, listen, hey, we have been getting treatment for 15 years. We didn't, not that we didn't get care, it's just doctors told us to do this. And so they didn't seek the right care. So that's where I think one of the important messages to seek the care early at the specialized centers. So age is important to seek the care early. Polycystic ovarian syndrome is quite common in our part of the world. Part of it genetic, environmental, and diet. All of those factors pull into that. उसकी expression का जो है genes की expression, so PCOS commonly called, so quite common. Then ये different factors की जिस तरह हम बात करें, genetics का कितना important role होता है, और अगर ये disease genetic हो, problem genetic हो, I would say, तो उसका treatment क्या होगा, उसका diagnosis कैसे होता है? हाँ जी, so उसमें ये कि part of that PCOS further is endometriosis, so which is treated through surgical treatments as well as through IVF. जहाँ तक genetics का ताल्लुक आ जाता है कि so genes होती हैं हमारे अंदर, they're like they dictate what happens to our bodies. So what color hair, what color eyes, all those things. So the diseases that passed on from our parents or other generations. So उसमें ये है कि from genetic diseases that can be diagnosed now early on. उसमें before the embryo is delivered to the uterus, we are able to figure out genetic diseases. उसको हम diagnose करना, उसको फिर to kind of to help couples seek genetic evaluation, and उसमें these disease को eliminate करना from the future, from the children is also possible. And those services are very unique, very high-end, and really difficult things to do. And that's really, we are able to bring that to Pakistan through our center with our roots in the United States and Europe. Future generation में ये problem pass on ना हो, उसके लिए medication है या उसके लिए भी कोई surgical treatment है? No, future generation, really, it's not fertility that being passed on. It is other diseases like sickle cell, thalassemias, cystic fibrosis, and some of the genetic diseases are there that can be easily tested and avoided in the children. So उसमें ये है कि हम बनाते हैं through in vitro fertilization, we make the embryo, and then we उसको हम test करते हैं, and then we only try उसमें transfer करते हैं embryos that are healthy. So let's say a chance maybe 1 in 4 or 1 in 2 that the child may have the disease that's may be lethal disease for that matter in children, or life-threatening or lifelong chronic disease. उसको आप you can avoid that by getting seeking this specialized care. And also that applies to the family balancing. Some of the families seek that, and that also can be addressed through genetic analysis कि जो family balancing आ जाती है कि जिसमें couples may seek that as well. अच्छा, ट्रीटमेंट्स की जिस तरह हम बात कर रहे हैं और फैक्टर्स की भी बात करें, क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं, तो एक बहुत कॉमन कॉज है ट्यूब्स का ब्लॉक हो जाना. इसका ट्रीटमेंट दुनिया भर में क्या है और पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस किया जाता है? हाँ जी, frequently जो है through either infection or endometriosis, tubes can be blocked, and that's quite common. But 25% of the couples will have this as an issue of their infertility. उसमें ये है कि the initial treatment is done with surgical or
जो है उसमें थ्रू मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, उसमें ये होता है कि ट्रेडिशनली जिस आप करते हैं कि नॉन मिनिमल इन्वेजिव जो ट्रेडिशनल सर्जरी अवेलेबल उसमें then the couple it will do more harm than good at times. So उसमें ये है कि we have the facilities to do minimally invasive surgery. So उसमें if the tubes can be fixed, then that's a great treatment for that couple. They're able to achieve pregnancy through more natural means, or that's through our Center of Excellence in Minimally Invasive Surgery. We're able to offer those services. जो है बाक्स में second tier is जो है जो alternative option, very good option is test tube baby or IVF. So that is a treatment for blocked tubes. उन ट्रीटमेंट्स के बारे में हमने भी बात की। अच्छा, हमारी सोसाइटी में ये होता है कि किसी भी डॉक्टर के पास जाने से पहले, फिजिशियन के पास जाने से पहले अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई है तो हम होम रेमेडीज ट्राई करते हैं। इनफर्टिलिटी के केस में होम रेमेडीज क्या फ़ायदेमंद साबित होती हैं या उनका नुकसान भी होता है, इसके बारे में ज़रा क्लैरिटी दीजिएगा। So home remedies, it depends upon what it is. You know, many treatments in our medical practice started out with home remedies. So it was home remedy by Chinese or mothers. They did that. It worked for years. Now the medicine picks up, gets logic behind it, puts that in medical practice. So when you talk about home, some of the home remedies are great, and really as long as you don't delay the access to care. So that's the important thing. If it's the first year for the couple under 35 and it's within 6 months, the couple over 35, hey, do what it takes, or well, you know, home remedies are okay. The only thing is if it doesn't put stress in the couple's relationship. बाकी है कि उसके बाद भी it's okay to do home remedies, but at the same time seeking the specialized care, because if there's a physical problem, there's a hormonal problem, or there's something that is there, it just by you know, home remedy, it will not achieve the final resolution or success. So it's okay to do home remedies, but important to seek the care. और आप टाइम पे अगर अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो तो वो बहुत बेहतर है। बहुत से लोग जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, डॉक्टर साहब आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तरीकाकार क्या है? एक्सेस का अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर पे किस तरह से कांटेक्ट किया जाए? हाँ जी, नहीं, we are very proud to be a part of Pakistan, and we are very proud to represent our country out there in the world, to say that we provide the best care, and that for the medical care, you know, couples can come in to Pakistan, to Islamabad, to get the best care in the world. हमारा ये है कि we have a website, afcivf.com, www.afc for American Fertility Center, IVF.com. वहाँ पे आप जाके information भी लीजिए, उसमें you can reach our staff through a contact form or through a chat, and chat with our, in real time with our very pleasant staff, as well as we have a Facebook page for American Fertility Centers, and unke through your telephone number, WhatsApp number is available, and through those telephone, PTCL, WhatsApp, all those are available to reach to our center and seek the care or reach out for your treatment. ये वो तमाम डिटेल्स हैं जो डॉक्टर साहब ने मेंशन कर दिए हैं कि किस तरह से अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर से रब्ता किया जा सकता है और अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं वहाँ पर। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। I know, thank you so much for me giving the opportunity to being here. It's a pleasure and a privilege to be here. Thank you so much. Thank you.